So we are starting with the third and the final session on set theory. I came across more questions from past year 𝒘𝒂𝒂𝒐 on set theory. So I put all of them in one place and compile this list. Take 3 to 5 minutes. Give this a try and then we'll continue. This is actually a set from 2018 CAT. You will not believe both slots. There used to be 2 slots in a day in 2018. Both slots had similar question with similar numbers, simply language was different. I have put both sets in this class sheet for you. Take 3 to 5 minutes and give it a try. Let me try and solve it for you. When you read this, you will realize that this question starts with the if, that means new information. There's a new condition here, new condition here. So if I had to categorize this set as A, B, or C, if I'm very good with set theory, I'll go with B. If I'm okay with set theory, but I have not solved questions of maxima, minima, conditional based set arrangements, I'll go with C. It is type B or type C. If you're very good, type B. If you're not so good with set theory, it is type C for you. Direction for questions. The fun sport provides training for gilli danda, kho-kho, ludo. Currently, it has an enrollment of 39 students, each of whom is enrolled in at least one of the 3 sports. The following details are further known. So we have here gilli danda, we have here kho-kho, and we have ludo.
There are total 39 students and everybody is enrolled somewhere. So there is nobody outside, that is 0. The number of people who are enrolled only in L is double the number of students who are enrolled in 3 sports. So whatever comes here, Ludo only is double. There are total 17 students in G. Gilli Danda, there are 17 participants. There is nobody outside, so this and this is 22. These dashes are 22. The number of students enrolled in G is one less, only G is one less than number of students enrolled in only L. तो ये 2x है, this is 2x minus 1. The number of students enrolled only in K is equal to number of students enrolled in both K and L. ये जो number है only K is equal to K and L. When you say K and L, you mean the central value and this value. If this is Y, this must be X plus Y. Read that part one more time. Number of students enrolled in K, only K, ये portion, only K, this part. Look at the cursor, ये वाला part. Is equal to enrolled in both K and L. Both K and L is X and Y, so X plus Y. Maximum students are enrolled in L. Ludo में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं. So others are less than Ludo. 10 students who are enrolled in G are also enrolled in at least one more course. So ये जो मैं dot लगा रहा हूँ, these people are part of G and 𝒘𝒂. These people are part of G and other two. These people are part of G and Ludo. So these three dots, all three dots combined are 10. This gives me a major hint. If these three are 10, this must be 7. I have got this equation, 2x minus 1 is 7. That implies x must be equal to 4. So out of these variables, I could directly find out x is equal to 4. So this turns into 7. This turns into 4. This turns into 4 plus y. And this is 8. Now you remember, the value for G is how much? 17. There are 17 people here in G. 17 people here in G. So this and this should be equal to 22. 8 plus y plus 4y. 4 plus y should be 22. This is x plus y, 4 plus y. So that gives me 2y is equal to 10, y is equal to 5. So this helps me in redrawing all of these in a better manner. G, 7, K, y is equal to 5. So 4 plus 5, 9. 2x, that is 8. This is 4. This is 5. Now these three dots were combined equal to 10. If I take this as A, this is 4. So this must be 6 minus A. Please pay attention to those values. 6 minus A. 6 minus A. Now based upon these, I need highest number of people playing what? Ludo. So what is Ludo value so far? 4 plus 5, 9 plus 8, 17. So Ludo is 17 plus A. So what is the value for G? G is already 17. So 17 plus A, as long as A is more than 1 or 1, is true. What about K? This is 4 plus 5, 9. 9 plus 9, 18. 18 plus 6, 24. So K is 24 minus A. Ludo is more. If I transfer, I will have 2A is more than 7. A is more than 3.5. Now please notice A cannot be above 6, because if A becomes above 6, it fails. It becomes negative. So A can be 4, 5 or 6 according to my estimates. Because A is more than 3.5. A is more than 3.5. So the first value for A is 4. Second is 5. Third is 6. If A goes beyond 6, तो ये हिस्सा negative हो जाएगा, which is not valid. So I have taken care of A being more than K, Ludo being more than K. Anyways,
Gulli Danda is 17 or you already 17 plus A. So as long as A is 1, 2, 3, 4, we are happy. Gulli Danda se already A is more than Gulli Danda. Gilli Danda. So A is 4, 5 or 6. Remember this, observe this, take your time, copy this down. So we started with two variables x and y. We found out both values x and y. Then we face another challenge that this number and this number are not known. So you could have taken the upper value as a, this could be 6 minus a. We are trying to minimize variables. With a single variable, I have managed to fill in all values. X and y are gone. So let me redraw that for you. This was 7, 9, 8, 4, 5. This was A and this was 6 minus A. Gilli Danda, Kho-Kho, Ludo. And what is A? A is 4, 5, 6. What is the minimum number of people who are enrolled in both G and L but not K? Minimum number of people who are enrolled in both G and L. G and L would be this part, but not K, that is A. So what is minimum value of A? That is 4. That is the minimum value. That is the question. It's a theta question. So you will always be in doubt, answer sahi hai ki nahi. If the students enrolled in K and L are in the ratio 19/22, how many students are enrolled in L? So these are the students in K. This is 9 plus 5 plus 4, that is 18. So that is 24 minus A. These people are enrolled in K. In L, it is 12 plus 5, 17. 17 plus A are enrolled in L. That ratio is 19/22. The question is, how many are enrolled in L? Do you actually need to solve this? Because anybody who is enrolled in L will be a multiple of 22. This whole circle in the ratio is 22. So total value will be multiple of 22. So that is your answer. Done. What you can do is, we can verify if it matches one of the values. See, I need 19 in the numerator. Can I say 24 minus 5 makes 19 and 17 plus 5 makes 22. So for A is equal to 5, this matches. For A is equal to 5, this matches. So you could have matched the value for A here. Let me redraw all of those numbers for you. This was a 4, 5, 9. This was 8. This was 7. This was Gilli Danda, Kho-Kho, Ludo, A. This dot was 6 minus A. And what was A? A was 3 or A was 4 or 5 or 6. New conditions. Due to academic pressure, students who were enrolled in all three were asked to withdraw from one of the three sports. So if somebody is in the middle, if I tell them एक game छोड़ दो, if somebody leaves गिल्ली डंडा यहाँ से, somebody leaves गिल्ली डंडा, तो वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पे overlap of 2 में. If somebody leaves ludo, तो वो कहाँ जाएंगे? यहाँ पे overlap of 2 में. They are part of 3. उनसे आप कह रहे हो एक game छोड़ दो, तो they will become part of 2. Read that part again. Due to academic pressure, the students who were enrolled in all three sports were asked to withdraw from one of the three sports. After the withdrawal, the number of students enrolled in G was less than the number of students enrolled in L. While the number of students enrolled in K went down by 1. After withdrawal, how many students were enrolled in both G and K? थोड़ा सा twisted है. जब withdraw करेंगे, after that students enrolled in G was 6 less than those enrolled in L. And K में से एक बच्चा कम हो गया. So overall what I understand, थोड़ा बड़ा diagram बनाते हैं. Let me draw larger diagram, bigger diagram for you.
7, 9, 4, 5, 8 a and 6 minus a. k में से एक वैल्यू कम होनी है, दैट मीन्स यहां से एक बंदा यहां आना है. अभी आई डू नॉट नो बाकी कितने जाएंगे. देयर आर 3 पीपल मोर इन द मिडिल. आई एम अज्यूमिंग इधर b चले गए, इधर आ जाएंगे 3 माइनस b, इधर आ जाएंगे 3 माइनस b. सो नाउ द क्वेश्चन सेज g में 6 लोग कम है l से. g minus l is 6. l minus g is 6. l minus g is 6. अभी L में कितने लोग हैं. दिस वन, ये तो बीच में 0 हो जाएगा. दिस 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 5 14 प्लस 3 17 माइनस b. इधर ऑलरेडी 8 है तो इधर हो जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3, दैट इज 16 प्लस 1 17. सो 17 प्लस a माइनस b. इतने लोग L में है. G में कितने लोग, हाउ मेनी पीपल विल बी देयर इन G. ये 7 और ये वाला a plus 1. This 1 plus this 8. 8 plus 6 14. So I will have here, ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा आपका. ये वाला नेगेटिव है और ये वाला प्लस है, कैंसिल हो जाएगा. केवल b बचेगा यहाँ पे. So I will have 6 6 plus 1 7 plus 7 14 14 plus b. ये लोग हैं G में. इनका जो डिफरेंस है that must be 6. Let me try. 17 minus 14 is 3. A is positive. अब ये वाला minus b, ये वाला minus will become minus 2b is equal to 6. So A minus 2b will become 3. What were the numbers for A? A could be 4, 5 or 6. थोड़ा ध्यान देना. If A is equal to 4, तो B को half होना पड़ेगा to match. A cannot be 4. If A is equal to 5, B को 1 होना पड़ेगा, which matches. अगर A 6 हो गया, 6 minus even number cannot be 3. So for this condition to work, कि उनका gap 6 होगा, A must be 5 and B must be 1. You put A is equal to 5 here, तो ये हो जाएगा 5 minus 2 is equal to 3. Let me redraw all of this for you. A कितना है हमारे पास 5, तो ये 7, ये 6 minus क्या हो जाएगा, 6 minus 5 is 1. और b कितना है 1, तो 5 plus 1 ये हो जाएगा 2. a was 5, उसमें एक 1 जुड़ जाएगा तो 6, बीच में 0. b was equal to 1, तो 5 plus 3 minus 1, that is 7. The others do not change. एक बार आप एडिशन चेक कर लो. It must be 32. This is गिल्ली डंडा, खो खो and ludo. How many students were enrolled in both G and K? ये लोग हैं both G and K वाले. ये लोग, बीच में तो 0 है तो G and K is equal to 2. पहली कंडीशन सेम है. ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर, people who were enrolled in all three were asked to withdraw and so on so on so on. G was 6 less than so on so on. तो ये जो आपने पूरा सॉल्व किया वो इसमें भी काम आएगा आपको. K went down by 1, तो यहाँ तक सब सेम है. After withdrawal, how many students were enrolled in both G and L? तो G and L आप देखो यहाँ से है 6 and 0, 6 and 0. तो how many are enrolled in both? 6. ये थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है, ये कैट के क्वेश्चन है 2018-19 के. टेक योर टाइम, ऑब्जर्व, वीडियो पॉज कर करके देखो, रिपीट कर करके देखो इफ यू हैव टू. जब टाइम मिलता है आपको सॉल्व करने का तो आई वुड सजेस्ट यू एक्चुअली ट्राई एंड सॉल्व. टेक योर टाइम, कंप्लीट दिस.
Moving on. In a community of 200 people who watched at least one of the three channels, BBC, CNN, DD, showed that 80% people watched DD, 22% watched BBC, 15% watched CNN. What is maximum percentage of people who can watch all three? If 5% people watch DD and 10% people watch DD and BBC, then what percentage of people watched BBC and CNN only? Referring to the previous question, how many percent of people watched all three channels? So I have a feeling 200 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे. Take 3 to 5 minutes. Try this. मैंने सॉल्व फॉर यू क्योंकि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन परसेंटेज में है और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस भी परसेंटेज में है. सो आई डोंट थिंक 200 का यहाँ पे कोई भी रोल है. So you have seen maxima, minima, how to handle these numbers. Go on, try. 3 to 5 minutes you have. 3 to 5 minutes. Let me try and solve this for you. So let me try this without actually drawing circles. Every person must watch at least one of these channels. So 100% is equal to region 1 plus region 2 plus region 3. Then what is addition of this? That is 102 plus 15, that is 117, is equal to region 1 plus twice region 2 plus thrice region 3. Subtract both. 17 is equal to region 2 plus twice region 3.
So here what we are saying is maximum people who can watch all three. So I will imagine this is equal to 0. So twice of this number is equal to 17. So region 3 must be 8.5. Straightforward. No gyan. If 5% people watch DD and CNN, it does not say only. It does not say only. Please notice. 10% people watch DD and BBC. Then what percent of people watch BBC and CNN only? Now I have to go within those circles because a specific portion has been asked. Percentage का सवाल है, stick with percentage. DD is 80%. 22% is BBC and 15% is CNN. बाहर 0 है, so I have to work within these limits. 5% people watch DD and CNN. ये और ये दोनों मिलाकर 5% है. 10% people watch DD and BBC. यहाँ से ये दोनों मिलाकर 10% है. The question is how many percent people watch BBC and CNN only? ये वाला सर्कल आपसे, ये वाला डॉट आपसे मांगा जा रहा है. Looks like CBD to me, but let me go into these numbers and see if I could locate or find some kind of pattern for you. Total 100% I have. Total 100% I have. So if I might have to create ABC as numbers here. I'm calling this number B. This is number B for me. The number in the middle is A. This total value is 80. So these three combine need to be 20. Any other way to solve this faster? All right, let me give it a try in a different manner. 100% is equal to circle A plus circle B plus circle C. Now, do you remember overlap of 2? The overlap of 2 is 10. The overlap, please observe, the overlap of 2 is 5. Please notice, the overlap of 2 is A plus B. Now, what do? In this, we add A. What have I applied? I have applied the formula of union. Na plus nb plus nc minus A union B. Because I have to go inside circles to give me idea, set 3 लगा देते हैं यहाँ पे. So this is 117. This is 117. Minus 15 is 102. 100 is equal to 102. यहाँ पर हो जाएगा minus A minus B plus A. ये plus A है. Cancel. Very beautifully notice we could find out B is equal to 2%. काफी tricky question था. I noticed once I go inside and write ABCD, वहां फंसने के chances हैं. ABCD अगर डाल दिया तो बहुत सारे empty slots हैं वहां पे. तो क्यों दिया है मुझे? Why am I being told ये दोनों मिलाकर 10 है, ये दोनों मिलाकर 5 है? So I could use it together, 10 and 5. The formula I've applied is A union B union C. Take your time, learn from this. Something new you got to see. Referring to the previous question, how many percent of people watched all three channels? All three में कितने लोग हैं? Can you find out all three? पिछले वाले क्वेश्चन से I could find out how much is B. I can answer for B. देखो, that gives me a good output कि ये अगर 2 है, ये दोनों combine 10 है, 12, तो ये 10 हो जाएगा. Please observe. ये अगर 5 है, this is combined 5. This is combined 5. Is it possible for me to find other terms? ये दोनों 5 हैं, this is equal to 2. This is 5 and this is equal to 2, 7. तो ये हो गया 8. ये हो गया 8. I'm still not able to find this. I need to find the central value A.
क्योंकि यहाँ पर A कैंसिल हो जा रहा है, A is getting cancelled. I can find out B, that is 2. If I add, no, this is not possible to be found क्योंकि यहाँ पर I am not able to split this. ये वाला जो 10 है इसको मैं 10 और A में split नहीं कर पा रहा हूँ. Still let me give it a try. If this is A, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 10 minus A, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 5 minus A. तो ये कितना हो जाएगा? This is 10 plus 5, 15, 15 minus A. When I subtract 15 from here, तो हो जाएगा 65 plus A. रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 वाले फॉर्मूले से if I work, तो एडिशन आके 100 हो जाएगा. Let me try. No, दो नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा. A cannot be found. A is CBD. A is CBD. A cannot be found here, guys. Very beautifully framed. ये जो आखिरी वाला ट्रिक था, ये आपको नया देखने मिला कुछ. सेट थ्योरी लगा के आपका आंसर आया. Moving on. Another very beautifully framed question you see after some time withdrawal and so on so on. So new data is given to you. You see such a large question LRDI कुछ ना कुछ नया बोल रहा होगा. What is the minimum possible number of volunteers? Which of the following information would enable me further to so on so on? So again, either level B or level C. You are very good with set theory B. Set theory उतना strong नहीं है, for you it is level C. A तो ये कतई किसी एंगल से नहीं है. प्रीवियस वाला भी काफी अच्छा क्वेश्चन था. So take 3 to 5 minutes, give it a try.
Help Distress HD is an NGO involved in providing assistance to people suffering from natural disaster. कोई काम की information नहीं है. Currently it has 37 volunteers. They are involved in 3 projects: tsunami relief in Tamil Nadu, flood relief in Maharashtra, and earthquake relief in Gujarat. Each volunteer working with Help Distress has to be involved in at least one of the relief projects. What are the names of these relief projects? One is tsunami relief, one is flood relief, and one is earthquake relief. And everyone has to participate. That means all 37 numbers are within these circles. Outside there is 0. A maximum number of people volunteered for FR project. Does it sound like the Ludo question to you? Highest people were participating in Ludo. So this is what I said. Similar kind of question was framed in 2 slots to keep the standard of the exam same. 2018. Among them, the volunteers involved in FR alone is equal to the volunteers having additional involvement in ER project. So FR alone is equal to FR and ER. We'll come back to this. The number of volunteers involved in ER alone is double the number of volunteers involved in all 3. If the value in the middle is X, ER is 2X. 17 volunteers are involved in TR. You notice numbers are also same, 17 volunteers. The number of volunteers involved in TR project alone is 1 less than number of volunteers involved in ER alone. ER is 2X, TR is 2X minus 1. Everything looks same. In terms of variables, everything looks same as the Ludo wala question. 10 volunteers involved in TR project are also involved in at least one more project. So these 3 dots are 10. This must be 7. So that gives me X is equal to 4. Identical set of numbers. They look identical. This is 7, this is 4, this is 8. So these 2 dots must be 6. If this is A, this must be 6 minus A. This information we have partially used. Let us go back to it. What does it say? This is 17 TR, this is FR, this is ER. Among them who FR wale, among them, the number of volunteers in FR alone is equal to volunteers having additional involvement in ER. So if this is Y, this is 4 plus Y. Now if this is 17, the first circle is 17, total people are 37. So 37. So this and this must be 20. 12 plus 2y. This and this must be 20. That gives me y is equal to 4. Y is equal to 4. Y is equal to 4. Let me write it down for you in a different colored pen. Y is equal to 4. So this total value becomes 8. This value becomes 4. That's it. In terms of A, I do not know what is A, but I know FR is more than others. So what is addition? 8 plus 4 plus 4, 16 plus 6, 22 minus A is more than 4 plus 4, 8 plus 8, 16, 16 plus A. If I transfer this, 6 is more than 2A, A is less than 3. Let me verify this one more time. This is A, this is 6 minus A. So FR is more than others. FR is highest. 8 plus 8, 16, 16 plus 6, 22.
22 minus A is more than this. Also, 22 minus A is more than 17 as well. So here I have 22 minus 17, 5 is more than A. So somehow I am getting only one value for A. I am getting A is equal to 4. Observe, is something wrong with this data? Verify calculations one more time. This is 17. Total values are 37. This must be 20. 8 plus 8 plus 4, that makes it 20. That matches. Everything matches. I'm getting A less than 3. I'm getting A. Achha, here I'm getting A less than 5. I'm getting A less than 5. I'm getting A less than 3. So less than 3 could be 2, 1 or 0. 2, 1 or 0. They are both less than. मैंने more less सोच के A को 4 ले लिया. So A is either 2, 1 or 0. A is 2, 1 or 0. Let me read all this for you. Names TRFRER, TRFRER. This was 7, 8, 4, 4, 8, A, 6 minus A. A was less than 3. So A was 2, 1 or 0. Based upon the given information, the minimum number of volunteers involved in both FR and TR, but not ER. FR and TR ये नंबर है, but not TR. इसको मिनिमम करना है. 6 माइनस A को मिनिमम करना है. तो A को मैक्सिमम ले लो 2. A को अगर आपने 2 ले लिया तो बाय डिफॉल्ट मिनिमम हो जाएगा 4. Which of the following additional informations would help you in finding exact number of volunteers? 20 volunteers were there in FR. मेरे सामने अभी कितना है? 22 minus A FR है. अगर ये 20 मिल जाए, I can find out A is the missing variable. Question था, which information will help you in answering everything? तो A से I can answer everything. Let us check others. There are 4 volunteers in all 3 projects. ये तो by default calculation से आ रहा है. Do you have to give me that information? No, I can reach that on my own. Question था, what additional information will help you in reaching all answers? "23 volunteers are involved in exactly one project. 8 plus 8 plus 7. So by default, Arna, why do I have to give this information to somebody? No need for additional information. What is the answer? A is the answer. A आपको मिल जाए information, you can answer everything out of it. Remember the diagram? Remember those values? What were the names? TR, FR and ER. 8, 8, 4, 4, 7, 6 minus A. A was either 2, 1 or 0. After some time, volunteers who were involved in all 3 projects were asked to withdraw from one project. As a result, one volunteer opted out of TR. जो central लोग हैं, people who are part of all 3, उनसे कह रहे हैं तुमको एक project छोड़ना पड़ेगा. तो they will become part of the other 2. एक बंदे ने TR छोड़ दिया. अगर कोई TR छोड़ेगा यहाँ से TR छोड़ेगा तो वो FR ER में आ जाएगा. तो यहाँ पर आपका +1 आ जाएगा.
देयर विल बी अ +1 हियर, ये 5 बन जाएगा आपका। वन ऑप्टेड आउट ऑफ ER, एक बंदा ER से निकल गया, ER से निकलेगा तो वो +1 यहां पर आ जाएगा, वो +1 आ जाएगा। while the remaining ones in all 3 projects opted out of FR, यहां से 2 लोग निकलेंगे FR से, तो 2 लोग यहां पर आ जाएंगे +2, तो बीच में 0 बन चुका है, बीच में 0 बन चुका है। If I have to redraw these circles, let us say I will redraw these circles, बीच में 0 है, बीच का ओवरलैप इज नॉट अ वरी फॉर मी। तो यहाँ पे 7 है, ऊपर 1 चला गया तो 7 - a 0, नीचे 2 चला गया a + 2, इधर 8 है, इधर 1 चला गया तो इधर 5 और इधर 8 है। TR FR ER। अब इसके बाद अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देन नेसेसरीली फॉलोज, इनमें से कौन सी बात हमेशा सच होगी। द लोएस्ट नंबर ऑफ वॉलंटियर्स आर नाउ इन TR, TR में कितने लोग हैं आप देखो, 7 + 7 14, 14 + 2 16, -2a हट जाएगा, ये -a हट जाएगा, तो TR हैज 16 वॉलंटियर्स। क्या ये लोवेस्ट है, क्या ये लोवेस्ट है, लेट अस चेक। 8 + 5 + 7, that is 20 - a, 20 - a। A अगर 2 है, A अगर 1 है, A अगर 0 है, in all these cases it is more than TR। A 2 पुट करोगे तो भी ये 18 ही है। ER में कितने हैं, 5 + 8 + 2 कितना होता है ये, 17 + a। ER में 17 + a है, is it more than 16? Yes, this is true। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बट अब कर देते हैं आपके लिए। More volunteers are there in FR than ER। अभी देखो ये FR है और ये ER है, दोनों में वेरिएबल a, अगर a का वैल्यू 2 हो जाए तो ये बन जाएगा 18 और ये बन जाएगा 19। इज 18 मोर देन 19? नॉट नेसेसरी। मोर वॉलंटियर्स आर देयर इन TR देन ER, TR तो कभी ER से ऊपर हो ही नहीं सकता। व्हाट इज ट्रू, फर्स्ट वन इज ट्रू फॉर श्योर। आफ्टर विड्रॉल ऑफ वॉलंटियर्स एज इंडिकेटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, आपको विड्रॉल कैसे करना है, एज द प्रीवियस क्वेश्चन। Some new volunteers joined the NGO. Each one of them was allotted only one project. बाहर से नए लोग आएंगे लेकिन एक ही प्रोजेक्ट देना है। In such a manner that the number of volunteers working in one project alone for each of the 3 projects became identical. बाहर से volunteers आएंगे बट उनको एक ही प्रोजेक्ट देना है आपको। At that point, it was also found that number of volunteers involved in FR and ER projects was same as the number of volunteers in TR and ER projects। तो पहले तो बाहर से लोगों को बुला के इनको बराबर करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे केवल यहाँ पर 1 वॉलंटियर देके मैं बराबर कर सकता हूँ। अब बोल रहे हैं वो वॉलंटियर्स जो FR एंड ER में काम कर रहे थे, ये FR एंड ER में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, FR एंड ER was same as the volunteers in TR and ER। ये ER TR ये आ गया आपका a + 2, तो आपने a को 3 कह दिया मुझसे, a is equal to 3 कह दिया आपने। अब क्वेश्चन है which of these has the highest number of volunteers। पहले तो बाहर से अगर एक बंदा और आएगा तो आपका TR में कितना हो गया, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर्ड पेन, आपका TR में हो गया 17। अब उसके बाद आप कह रहे हो a is equal to 3, तो यहां पर आप 3 पुट करोगे यहां पर, तो that will become FR will become 17। आप यहां पर 3 पुट करोगे तो ER becomes 17 + 3 20। So which one has the highest number of people now? ER has the highest number of people। Every condition has been followed। क्या कहा आपने, FR और ER, ये FR ER है, इसको बराबर करना है TR ER से, तो I get A is equal to 3। बाहर से एक बंदा आ गया, ये 1 हो गया,
तो ऑलरेडी ये 1 1 1 इक्वल है, ये +1 होगा तो 8 8 8 इक्वल है। अब मुझसे कह रहे हैं किसमें मैक्सिमम लोग है, तो TR में 17 हो गए, ये +1 हो गया तो 17 हो गए। यहाँ पर आपने 3 पुट कर दिए, 3 किसका था, ये FR का था, A is equal to 3, तो FR वाले 17, ER वाले 20, तो हाईएस्ट नंबर इज ER। ये है कैट लेवल बेटा, ऐसा मैनिपुलेट करते हैं क्वेश्चन को। देखो सीखो इनसे। Take 2 minutes, copy this down. I'll then go to the next slide. Moving on. Combining arithmetic progression with set theory. Take 3 to 5 minutes and try.
In a society, the newspapers of only three languages, Marathi, Gujarati, Hindi, are distributed. Each family residing in the society reads newspapers of at least one of the three languages. So if you live in the society, you must read newspaper of at least one of the languages. Total number of families reading newspapers of exactly one language can be divided into three types: only Marathi, only Gujarati, only Hindi. These three numbers are in AP. See, the question does not tell me what is AP. I need to know AP's arithmetic progression in no particular order. Similarly, the three types of families reading newspapers of exactly two languages are also in AP. The number of families reading newspaper of all three languages is 1/10 of the number of families reading only Gujarati newspaper, which in turn is 2/3 of the families reading only Hindi newspaper. The number of families reading both Marathi and Gujarati newspaper is 15, whereas the number of families reading both Gujarati and Hindi newspaper is 19. The number of families reading Hindi newspaper is 70, which is more than the number of families reading Marathi newspaper. So the question does not tell me how many families are there, but they must read at least one of the newspapers. So I will put three circles there. These are for languages: Marathi, Gujarati, Hindi. This dot, and this dot, they are in a AP. Region 1, they follow AP. These crosses are also in AP. Region 2 also form AP. Now, whether it is Marathi, only Marathi, higher than Gujarati, than in Hindi, I don't know the sequence. They follow AP. So AP is what? A constant difference sequence. Now, up to this point, I have used all the information that I have up to this point. The number of families reading all three newspapers is 1/10 of those families reading only Gujarati newspaper. So only Gujarati, it must be a multiple of 10. If this is 10x, all three is x. Please observe, how did I assume that number? Families reading all three languages is 1/10 of families reading only Gujarati newspaper, 10x, which in turn is 2/3 of the families reading only Hindi. This 10x is equal to 2/3 of only Hindi. So when I rearrange, this becomes 15x. So I can think of couple of possibilities. If this is 10x, this is 15x, this could be 20x. Or there's a gap of 5x, this could be 5x also. So this number here can be either 5x or 20x. I do not know, because they're in an AP. I have got here 10x, I have got here 15x. The gap is 5x. In an AP, the gap is equal. So I can have 5x more, 20x, or I can have 5x less, 5x. The number of families reading both both Marathi and Gujarati are 15. Marathi and Gujarati. This number and this number, this and this combined are 15. So I can put the number in the middle here as, learn these tricks, 15 minus x. This is x, 15 minus x. Whereas reading both Gujarati and Hindi is 19. Gujarati Hindi is this side, so these are 19. So what I can put here is 19 minus x. A small twist here. Do you see from here to here there's an increase of 4? If there's an increase of 4, there are two possibilities. This number is 23 minus x, or this number is 11 minus x. I do not know. You don't know. You don't know that part. The number of families reading Hindi newspaper is 70. Very nice. This is 70, which is more than the number of families reading Marathi newspaper. So Marathi paper वाले लोग कम होंगे,
that number will be less than 70. So one way to go about this is actually finding out the value of x, क्योंकि मेरे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी, देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी x के, ये 70 दिया हुआ है, तो आई कैन डेफिनेटली फाइंड x। तो क्योंकि आपको बोल दिया हिंदी वाले ज्यादा है मराठी से, तो अच्छी एक ही बात होगी, एक एक्सपोर्ट करने पे ये ज्यादा आ रहा होगा हिंदी से, एक एक्सपोर्ट करने से कम आ रहा होगा। सो आई एम गेटिंग द फीलिंग ये 5x आएगा। लेट मी चेक। x plus 19 minus x, which is 19, plus 15x, 15x plus 19। अब ये हो सकता है plus 11 minus x is equal to 70। आई एम ट्राइंग दिस, आई डोंट नो क्या आंसर आएगा। This is 30. When 30 is brought on this side, it becomes 40. 40 is equal to 14x। हो सकता है कि आप सोचो, is it possible? Is it possible I will have 14 is equal to 40x? क्योंकि number of families है तो integer होगा, decimal नहीं होगा। This is not possible। ये कितना है 15x, ये cancel हो गया, ये cancel हो गया। This is 15x, ये दोनों मिलाकर 19, 19 और ये 23 minus x। 15x plus 19 plus 23 minus x is equal to 70। तो ये कितना हो गया 42। When 42 is subtracted, ये हो जाएगा 28। When I arrange this, ये हो जाएगा 14x, x is equal to 2। Very beautifully I found x is equal to 2। अगर x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है, तो ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 17, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 20। 20 x is equal to 2। अगर मैं यहाँ पर ये 2 पुट कर दिया तो ये बन जाएगा 21। 13 plus 2 plus 21, that is 34 plus 2 36। 36 में अगर मैं इसको 2 पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 40, तो ये बन जाएगा 76। 76 हो नहीं सकता, तो 2 इसमें पुट करेंगे, that is 10। 10 20 30 13 17 21। परफेक्ट, एवरीथिंग फॉलोज। एपी बन गया, सेंट्रल वैल्यू मिल गई, आपका पूरा क्वेश्चन बन गया। देखो, आई रीड आउट द डायग्राम हियर फॉर यू। दिस वाज 10 20 30, central number was x, that is 2 13 17 21। this is 70। this was Gujarat, this was Marathi, Gujarati, Hindi। So outside कोई भी नहीं है, they have to read at least one paper, one language newspaper। What is the total number of families in society? सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना है। तो one trick you need to learn today। सबसे बड़ा नंबर 70 is known, तो ये पूरा सर्कल 70 है, तो आप बाहर देखो अंदर मत देखो। 70 plus 20 plus 10 100 plus 30। एक एक करके why do you want to add 7 numbers 8 numbers? पूरा सर्कल 70 है ना, तो उसको कवर कर दो। डोंट लुक एट दैट, लुक एट आउटसाइड नंबर्स, उनको ऐड कर दो। 70 plus 20 plus 10 100 plus 30 113। What is the number of families reading newspapers of both Marathi and Hindi? मराठी लैंग्वेज इधर, हिंदी लैंग्वेज इधर, इधर से चेक करेंगे मराठी एंड हिंदी कितना आ रहा है अपने पास 23। ओनली नहीं कहा है, देयर इज नो ओनली। ओनली कहा होता तो आई विल से 21। 21 भी ऑप्शन में, डोंट मार्क 21, जल्दबाजी मत करो। मराठी एंड हिंदी इज 23।
मूविंग ऑन, देखो पॉसिबिलिटीज हमेशा चेक करने हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कि इंक्रीज किधर डिक्रीज किधर हो रहा है। सो आई कंसिडर्ड बोथ पॉसिबिलिटीज, उसके लिए ही एक्स्ट्रा हिंट दिया था कि हिंदी रीडिंग वाले 70 हैं, दे आर मोर देन मराठी, ताकि आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओ। कैट में आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इफ देन वाले पॉसिबिलिटी वाले आ रहे हैं। लर्न टू एंटरटेन बोथ पॉसिबिलिटीज। Again, take 3 to 5 minutes for this particular set. In a residential colony of 600 families, it is found that number of families who own a motorcycle is 100 more than families who own a car, which is
which in turn is 50 more than those families who own a scooter, which in turn is 100 more than families who own none of the three vehicles. What is minimum possible number of families owning none of these vehicles? If 100 families own at least two vehicles, what is maximum possible number of families owning motorcycles? If the families either own only one vehicle or does not own any vehicle, then how many families own a car? So very weird kind of language is given. No number is given us as a fixed value. There are 600 families. Then there are families who own motorcycles, families who own car, families who own scooter. Motorcycle, car, scooter. And these are given to us in relation to families that do not own anything. If this is X, then families which own scooter is 100 more than families who own none. If this is X, this is 100 plus X. Families who own a car is 50 more than families who own a scooter. Families who own a motorcycle is 100 more than families who own a car. So I'll write that number on the left side so to avoid confusion. तो आप बीच में overlap देख लोगे. So that number to us is 100 more than this. 250 plus X. Now total families are 600. What is minimum possible number of families owning none of the three vehicles? मुझे इसको minimize करना है. For the first time I am seeing a question जिसमें बाहर की वैल्यू को मैक्सिमा या मिनिमा करना है. How do I approach this? Let me start with some calculations. मेरे पास 600 families हैं, which will be region 1 plus region 2 plus region 3 plus ये बाहर वाले इनको I am calling X. Then what is the sum here? 250 plus 150 plus 100. 250 plus 150, 400 plus 100, 500 plus 3x is equal to region 1 plus twice region 2 plus 3 times of region 3. ये क्या होता है? हम इसे कहते हैं addition of instances. इसमें x नहीं काउंट होगा राइट साइड में. x जो है वो सर्कल्स के अंदर में नहीं काउंट होगा. So how do I move around this number and find x? ऊपर ज़्यादा दिख रहा है. I'm subtracting 600 minus 500, 100 minus 3x is equal to, इनको माइनस कर दिया, कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस रीजन 2, ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस रीजन 3 और इधर आ जाएगा x. मुझे x पे काम करना. आई एम ट्रांसफरिंग ऑन द अपोजिट साइड. 100 प्लस रीजन 2 प्लस 2 रीजन 3 इज इक्वल टू, इसको मैंने इधर भेज दिया तो 4x. अब क्योंकि मुझे इसे मिनिमम करना है, ये तो 100 फिक्स्ड है, 100 फिक्स्ड है. अगर x को मिनिमम करना है तो इनको 0 करना पड़ेगा. रीजन 2 और रीजन 3 अगर 0 हो गए, रीजन 2 रीजन 3 अगर 0 हो गए तो 4x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 25. इसका मिनिमम वैल्यू 25 है. टेक योर टाइम, ऑब्जर्व. अब मैं यहाँ पर यूनियन के फॉर्मूले क्यों नहीं यूज कर सकता? यूनियन के लिए फिर मुझे ये सब पता होना चाहिए. और फिर उसमें ABCD करके सरदर्द क्यों लूं मैं? मुझे पता है रीजन थ्योरम क्या होता है. 600 इज इक्वल टू रीजन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस x. x क्या है? द वन दैट बिलोंग्स टू नो वन. व्हाट इज 500 प्लस 3x? इसको बोलते हैं इंस्टेंसेस. ऐड कर दिया, which is equal to region 1 plus twice region 2 plus thrice region 3. I still do not know मैं वेरिएबल कम कैसे करूं. इक्वेशंस को माइनस कर दो तो ये आपका रीजन 1 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. रीजन 2 का भी एक नंबर कम हो गया, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 है तो कम हो गया. रीजन 3 का भी एक वैल्यू कम हो गया.
अब मुझे x का मैक्सिमम मिनिमा खेलना है, तो मैंने x को एक साइड भेज दिया, 4x इज इक्वल टू 100 प्लस दिस। अब मुझे x को मिनिमम करना है, तो मैं इनको 0 ले लूंगा। अगर x को बोलता मैक्सिमम करो तो सरदर्द बढ़ जाता हमारा, हेडेक बढ़ जाता है यहाँ पे। तो मिनिमम वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 25। If 100 families own at least 2 vehicles, what is maximum possible number of family owning motorcycles? मोटरसाइकिल वाले फैमिली कौन है, मोटरसाइकिल वाले फैमिली कौन है, मोटरसाइकिल वाले फैमिली ये है, ये। मुझे इनको बड़ा करना है। देखो मैं 2 मिनट पहले करता मेरा हेडेक बढ़ जाएगा। मुझे इन्हें बड़ा करना है, मैक्सिमम करना है। तो 250 प्लस x को मैक्सिमम करना है, तो मतलब x को मैक्सिमम करना है। x को अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है। अब वो कैसे करेंगे? Families that own at least 2 vehicles, at least 2, at least 2, मतलब रीजन 2 और रीजन 3 दोनों मिलाकर आपसे कह दिया 100 है। अब देखो यहां पर भी आपके वही दोनों वेरिएबल फंस रहे हैं। अब सोचो अगर मैं वो 100 को यहां पर रखूंगा तो ये बन जाएगा 300 डिवाइड बाय 4, 200 डिवाइड बाय 4, 50। अगर ये वाला 100 मैं यहां रख दूंगा तो ये बन जाएगा 200 प्लस 100, 300। मेरे को क्योंकि x को बढ़ाना है, अब मेरी चॉइस है मैं x इसको 100 को कहाँ रखूं। मैं इसको दे सकता हूँ 100 या इसको दे सकता हूँ, मैं दोनों को बांट भी सकता हूँ, बट किसके सामने बड़ा नंबर है, रीजन 3 के सामने बड़ा नंबर है। अगर इसको आपने 100 दे दिया तो आपका लेफ्ट हैंड बन जाएगा 300, राइट हैंड बन जाएगा 4x, कैंसिल 75। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज 75, 75 प्लस 250 इज 325। देखो अल्टीमेटली दोनों क्वेश्चन किससे सॉल्व है, x से। लकीली क्योंकि यहाँ पर भी इक्वेशन व्हाट डू वी हैव, 250 प्लस x, इसको मैक्सिमम करना है। तो आई नीड टू गिव x लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल। Moving on. If the families either own one vehicle or doesn't own any vehicle, होगा तो एक vehicle होगा, नहीं तो कोई vehicle नहीं होगा। मतलब रीजन 2 रीजन 3 ऑलरेडी 0 है, रीजन 2 रीजन 3 ऑलरेडी 0 है। तो क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी फैमिलीज ओन अ कार। आपने देखो यहां पर भी रीजन 2 रीजन 3 0 करके ही सॉल्व किया था। Families either own one vehicle or they do not own any vehicle, उसकी vehicle है ही नहीं। आपका x 25 आएगा इस केस में, मतलब कि ये 0 होंगे। x अगर 25 आएगा, दिस इज 125, दिस इज 175, दिस इज 275 और ये 25। बस एक बार चेक कर लो टोटल 600 बनता है कि नहीं बनता। this is 150 and this is 450, बन गया आपका 600। How many families own a car? कार वाले फैमिली ये हैं और कार वाला नंबर 175। इंडिविजुअली आप देखो तो एवरी क्वेश्चन हैड समथिंग न्यू। यहाँ पर भी इफ है, यहाँ पर भी इफ है, समथिंग न्यू। यहाँ पर भी क्या था, मैक्सिमम मिनिमम। लकीली हमने एक ही वेरिएबल लिया एंड दैट वाज इजियर फॉर अस टू मैनेज। एक ही वेरिएबल लिया तो फॉर अस इट वाज इजियर टू मैनेज। I hope you are able to keep up with this. Take your time, comprehend this, copy down everything.
Moving on. Try. This is one of the biggest sets of set theory ever seen in CAT. Recent years का question है, maybe 2020 और 2019 का set है ये. Read everything. I'll give you 6 to 8 minutes. Don't panic. 6 to 8 minutes are needed क्योंकि बहुत information है. if what can be best said or concluded. तो हर जगह पे एक नया डाटा है. No matter how good you are with set theory, it is type C. It is type C, no doubt about it. Read. 6 to 8 minutes you have.
you would have noticed there are a lot of data floating around. Applicants for the doctoral program of MB Institute of Engineering AI and BAMB Institute of Engineering BI have to appear for a common entrance test. The test has three subjects: physics, chemistry, maths. Among those who appeared CET, those at or above 80th percentile in at least two sections and at or above 90th percentile overall are selected for advanced test. पहले तो दो सेक्शन या तीन सेक्शन में more than 80 होना चाहिए और overall more than 90 होना चाहिए. Read that part. अगर ये true है then you will go for AET. Read that one more time. CET में physics, chemistry, maths है and in that you must have at least or above 80 percentile in two sections and or at above 90 percentile overall. इनको भेजेंगे AET के लिए. Connected by AI. AET is used by AI for final selection. जो AI है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये फाइनल सिलेक्शन ले लेता है AET से. For 200 candidates who are at or above 90th percentile overall based upon CET, following are known about their performance in CET. No one is below 80th percentile in all three sections. 150 are at or above 80th percentile in exactly two sections. The number of candidates at or above 80th percentile only in P is same as the number of candidates at or above 80th percentile only in C. The same is the number of candidates at or above 80th percentile only in M. Number of candidates below 80th percentile in P, number of candidates below 80th percentile in C, number of candidates below 80th percentile in M are 4:2:1. BIE uses a different process. ये पूरा किसका था? ये AIE का process था. BIE uses different process for selection. If any candidate is appearing for AET by AIE, BIE will consider their AET score for final selection, provided the candidate is at or above 80th percentile in P. Any other candidate at or above 80th percentile in P in CET but who is not eligible for AET is required to appear separate exam. अगर 80th percentile है और आपने बाकी कंडीशन फुलफिल कर दिया है 80th percentile P, तो आपको सिलेक्शन देगा. लेकिन any other candidate at or above 80th percentile in CET but who is not eligible for AET, मतलब कि फिजिक्स में है किसी और में नहीं है तो एलिजिबल नहीं है AET के लिए, उनको अलग से टेस्ट लिखना पड़ेगा BIE फॉर फाइनल सिलेक्शन. और 400 लोगों ने appeared have got 80th percentile above in P. 400 लोगों का 80th percentile above है P में. तो पहले बेटा AIE की बात कर लेते हैं. AIE में सेट थ्योरी की बात हो रही है. जो लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में, थोड़े बड़े सर्कल बनाता हूं मैं, क्लियर बनाता थोड़ा सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये वो लोग हैं जिनका ऑलरेडी 80th परसेंटाइल से ऊपर है. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका बिलो 80 हो ऑल थ्री में, मतलब बाहर कोई बच्चा नहीं है. 200 बच्चे हैं, उनको इनमें बांटना है. अगर कोई बच्चा यहाँ पर होता तो उसके फिजिक्स में भी 80 नहीं है, केमिस्ट्री में, मैथ्स में भी नहीं है. ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं. 150 स्टूडेंट्स हैं जिनका 80th और अबव है एग्जैक्टली दो सेक्शंस में. दो सेक्शंस वाले 150 लोग हैं, मतलब कि ये और ये मिलाकर कितने हो गए? 50. ये और ये मिलाकर 50 हो गए. बीच वाले का हमें पता नहीं है. दैट मीन्स ये और बीच वाले मिलाकर 50 हो गए. द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who scored 80th percentile or above in only P, only C, only M are equal. ये नंबर आपका बराबर है.
दिस गिव्स मी आइडिया, बीच में भी एक नंबर आएगा, इफ आई कॉल इट y, बीच वाला नंबर एक y आएगा, तो आपका 3x प्लस वाई 50 के बराबर है, मतलब x की जो वैल्यू है वो लेस देन 17 है, क्योंकि 50 नहीं क्रॉस कर सकते बेटा आप, x की वैल्यू हो सकती है 16 हो, 15 हो, 12 हो, 50 नहीं क्रॉस कर सकते आप। अब ये क्या बातें हो रही हैं, जिनका 80th परसेंटाइल से बिलो है P में, उनका रेशो 4 है, 2 है, 6 है। मतलब आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, मैं डॉट लगाऊंगा, देखो डॉट लगाऊंगा, जिनका 80th परसेंटाइल से कम है P में, वो ये लोग हैं और ये डॉट है। x कितनी बार है, 2 बार और एक डॉट। जिनका केमिस्ट्री में 80th परसेंटाइल से कम है, वो ये दो लोग हैं, x एंड x, और एक ये डॉट है। जिन लोगों का मैथ्स में कम आया, बिलो 80th परसेंटाइल आया, वो ये दो लोग हैं, x और एक ये डॉट है। तो अभी समझ रहे हो, अगर मैं इन डॉट्स को ऐड कर दूं तो ये कितना हो रहा है, 7। मुझे ऐसा एक लिंक मिल रहा है, मैंने इसको y ले लिया, तो मुझे ऐसा लिंक मिल रहा है 7z, ये 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू x 2 बार आ रहा था हर जगह, तो 6x, और ये डॉट एक बार आए, विच इज 150। सर ये क्या कर बैठे आप, बेटा ऐसे इक्वेशंस बनेंगे, वो लोग बाहर हैं। फिजिक्स के बाहर कौन है, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो फिजिक्स के बाहर ये है और ये डॉट है। केमिस्ट्री के बाहर कौन है, ये दोनों है और ये डॉट है। मैथ्स के बाहर कौन है, ये दोनों x और ये डॉट। इनको जब ऐड करोगे तो 6x आ जाएगा आपका। 150 क्या चीज है, ये लोग हैं। सेंट्रल वाली वैल्यू किसी के बाहर नहीं है, काउंट क्यों होगी, कहीं काउंट नहीं होगी सेंट्रल वैल्यू। आपके पास ये इक्वेशन है 3x + y इज इक्वल टू 50। इससे मुझे पता पड़ रहा है x लेस देन इक्वल टू 17। अब ये तो बन गई खतरनाक सी इक्वेशन। अब इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेंगे, x को 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, हमें क्या चाहिए, 7 का मल्टीपल चाहिए। इनफैक्ट 150 से ऊपर कौन सा मल्टीपल है 7 का जो आपको सबसे पहले क्लिक करता है, 150 मल्टीपल नहीं है, 140 इज अ मल्टीपल। 140 में 7 ऐड करो 147, 7 ऐड करो 154, लेकिन यहाँ तो 4 बन नहीं सकता। 154 के बाद 161, 161 के लिए इसको ऑड होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। 161 के बाद आता है 168, 168 के लिए x को क्या होना पड़ेगा, x को होना पड़ेगा 3, 168। अगर ये 168 है तो आपका z कितना बन जाएगा, व्हाट विल z बिकम, z will become 24। अब और क्या क्या प्रॉपर्टी आपने सीखी है, जब जब ये बढ़ेगा 7 से, तब तब ये बढ़ेगा 6 से। अगर ये और बढ़ेगा 7 से तो ये 17 और ये 6 से बढ़ेगा 36। लेकिन x cannot be more than, प्लीज ऑब्जर्व 17, तो ये वैसे भी नहीं हो सकता। तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है, x के लिए और z के लिए। टेक योर टाइम, ब्रीथ, सोचो ये क्या किया हमने, थोड़ा सोचो, टेक योर टाइम, सोचो। हमने लीनियर इंटीग्रल पेयर सॉल्व किया, मेरे पास राइट साइड में 150 से मुझे आगे जाना है और मुझे 7 का मल्टीपल चाहिए, तो मुझे क्लिक को 140 इज वेरी क्लोज। 140 में फिर मैं 7 7 7 ऐड करता चला गया। जब मैं 168 पहुंचा तो मुझे ये 18 मिल गया और ये 24 मिल गया, तो ये 3 मिल गया और ये 24 मिल गया। देखो यहाँ पे अब ये दोनों क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, डू यू रिमेम्बर, कभी अगर ऐसी इक्वेशन बनती है बेटा, दो नंबर विच माइनस साइन है, तो x एंड z विल इंक्रीज टुगेदर डिक्रीज टुगेदर। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, दैट मींस मेरे पास दो सेट बनेंगे इसके, मेरे पास एक नहीं दो सेट बनेंगे। तो मैं इसको रीड्रॉ करता हूं आपके लिए अगली स्लाइड पे। आई विल ट्राई टू रीड्रॉ बोथ फॉर यू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैं पहले ये 3 वाला ड्रॉ कर रहा हूं, 3 and 24 वाला। ये दिस इज 3 3 3, दिस इज 3 3 3। तो बीच में y कितना हो जाएगा, देखो ये 3x हो जाएगा, 3 इंटू कट करके 9, तो बीच में आ गया 41। अब बाहर वाली वैल्यू कैसे मिलेगी ये भी आप देखो,
फिजिक्स के बाहर कितने थे? 4 इंटू जेड, हमारा क्या रेशो था? 4:2:1। फिजिक्स के बाहर 4 थे, z कितना है? 24, आपने z का मल्टीप्लायर लिया था यहाँ पे, z का मल्टीप्लायर 24 इंटू 4 96, बाहर मुझे यहाँ 96 चाहिए, ये ऑलरेडी 3 और 3 है तो ये 90 हो गया। ये फिजिक्स के बाहर लोग हैं। वैसे ही केमिस्ट्री के बाहर कितने लोग हैं? देखो ये 2 है, 2 इंटू 24 48, केमिस्ट्री के बाहर मुझे 48 चाहिए, ये 3 और 3 6 हो गया तो ये 42 हो गया। मुझे मैथ्स के बाहर कितना चाहिए? 1, 1 इंटू 24 24, मैथ्स के बाहर 24 चाहिए, तो 3 + 3 6 + 18, ये हो गया। तो ये मेरी कंप्लीट सेट हो गई पहली वाली। दूसरी सेट क्या हो जाएगी? क्योंकि दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, तीसरा होता है आई विल हैव टू ड्रॉ थर्ड वन एज वेल। मेरे पास x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 10 है। इफ आई पुट 10 हियर तो ये कितना हो जाएगा? 30, 30 सब्ट्रैक्ट विल बिकम 20 इन द मिडिल, x का वैल्यू 10 है। अब फिजिक्स के बाहर कितने लोग हैं? देखो आपका z का वैल्यू कितना है? 30, z का वैल्यू इज 30, फिजिक्स के बाहर है 4 इंटू 30, फिजिक्स के बाहर 120 लोग हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हमारी x की वैल्यू 10 है बेटा, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये बीच में आ गया था हमारे पास 20, ये 20 आ गया था। अब हमारे पास देखो फिजिक्स के बाहर है 4 इंटू 30 विच इज 120, तो ये 100 है। केमिस्ट्री के बाहर था 4 इंटू, ये था 2 इंटू 30, केमिस्ट्री के बाहर था 2 इंटू 30, z 30 है, 2 इंटू 30, तो केमिस्ट्री के बाहर कितना है? 60 है, केमिस्ट्री के बाहर 60, तो ये 20 20, तो ये 40। और मैथ्स के बाहर था 1 इंटू 30, मैथ्स के बाहर था 1, ये देखो 1, ये मैथ्स के बाहर वाले लोग हैं, मैथ्स के बाहर 1, तो ये 30 है, तो ये 10 10 10 हो गया। ये आपकी कंप्लीट टेबल हो गई। What can be best concluded about the number of candidates sitting for a separate test for BIE? सेपरेट टेस्ट आप कब लिखोगे BIE के लिए? देखो AI के लिए आपको किसी दो में स्कोर करना है, BIE के लिए BIE uses different criteria. If a candidate is appearing for AET by AIE, BIE will consider AET score for final selection process, provided the candidate is scoring 80th above or 80th percentile in P. Any other candidate at or above 80th percentile in P in CET who is not eligible for AET will be required to appear separate test for BIE. तो टेस्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है? देखो पहले तो आपको फिजिक्स में स्कोर लाना पड़ेगा, तो ये फिजिक्स वाला सर्कल है, लेकिन आपको AIE में फेल होना पड़ेगा। AI कंडीशन क्या थी? आपको मिनिमम 2 में स्कोर करना है। इसका मतलब है आपको अगर सेपरेट टेस्ट लिखना, अगर आपको सेपरेट टेस्ट लिखना है तो आपको ओनली फिजिक्स में पास होना पड़ेगा। ओनली फिजिक्स वाले 3 और 10 है, so either 3 or 10, that is the answer. Read that part one more time. यहाँ पढ़ो देखो, BIE uses different criteria for selection process. If any candidate is appearing AET by AIE, BIE considers their AET score for final selection, provided the candidate is at or above 80% in P. तो P का पूरा गोला देखना है मेरे को। Any other candidate at or above 80th percentile in P in CET, but who is not eligible for AET, is required to appear separate test to be conducted by BIE. तो BIE के लिए कौन सेपरेट टेस्ट देगा? जो फिजिक्स में हो और केमिस्ट्री और मैथ्स में ना हो, क्योंकि अगर इनमें से किसी और में एक साथ आ गया तो वो तो सेलेक्ट हो गया ना AIE में, वो BIE क्यों जाएगा? BIE में तब जाएगा जब ओनली फिजिक्स में क्लियर करेगा। दैट आंसर इज 3 और 10. If number of candidates who are at or above 90th percentile overall and also above 80th percentile in all three sections is actually a multiple of 3, multiple of 5, तो multiple of 5 ये तो है नहीं, multiple of 5 ये है, all three बोला है ना, all three sections, तो बीच वाला नंबर 20 multiple of 5. What is the number of candidates who are at or above 90th percentile
ओवरऑल एंड एट और अबव 80th परसेंटाइल इन बोथ पी एंड एम। पी और एम दोनों में होना चाहिए 90th परसेंटाइल, तो ये हो गया 90th परसेंटाइल में दोनों। ओनली नहीं कहा है ना, अबव 80th परसेंटाइल इन बोथ पी एंड एम, पी एंड एम दोनों मिलाकर कितने हो गए 60। प्लीज नोटिस दिस पार्ट, प्लीज ऑब्जर्व दिस पार्ट। Moving on. If the number of candidates who are at or above 90th percentile overall and also above 80th percentile in all three sections in CET is actually a multiple of 5, then how many candidates were shortlisted for AET for AIE? तो बीच वाली वैल्यू मल्टीपल ऑफ 5 है, इसके बाद कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए इनके लिए, तो मुझे रीजन 2 एंड रीजन 3 गिन के इनको देना है। रीजन 2 में मल्टीपल ऑफ 5 पहले बोला है, ध्यान देना, मल्टीपल ऑफ 5 इन ऑल 10 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 20, 10 20 30 70 100 170। पिछला डायग्राम काम आ गया हमें। This was 20, this was 40, this was 10, this was 100, 10 10 10। वो लोग जो एलिजिबल हैं AET के लिए, AET के लिए एलिजिबल कौन है, जो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में अबव 80 परसेंटाइल है। कम से कम 2 सब्जेक्ट मीन सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट्स एंड 3 सब्जेक्ट्स। if the number of candidates who are at or above 90th percentile overall and are also at or above 80th percentile in P in CET is more than 100, how many candidates had to set for separate BIE? ये मेरे को नहीं समझा। ये मेरे को समझा कि जो फिजिक्स में है CET में, उसमें 100 से ज्यादा लोग हैं। अभी इसमें कितने लोग हैं, 10 प्लस 10 प्लस 20 दैट इज 40 प्लस 40 80। फिजिक्स में 80 लोग हैं। फिजिक्स में मेरे को मोर देन 100 चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, मोर देन 100 इन फिजिक्स। सो 18 plus 42 60, 60 plus 41 60 plus 41 101 plus 3, यहाँ पर 104 लोग हैं, यहाँ 104 लोग हैं। तो मुझे इस वाले डायग्राम के साथ काम करना है। व्हाट इज दैट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बीच में 41 है, यहाँ 42 है, यहाँ 18 है, व्हाट एल्स वाज देयर, 3 3 3 3 3 3 एंड हियर इट इज 90। क्या कंडीशंस है, क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं, if the number of candidates who are at or above 90th percentile overall and also at or above 80th percentile in physics is more than 100, how many candidates had to set for separate BIE? पहली बात तो यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि फिजिक्स में 400 लोगों के जो हैं वो 80th और अबव है। अब मेरे पास यहां पर 104 लोग हैं, 104 लोग आई हैव हियर। आउट ऑफ दीज 104 ये लोग कहीं ना कहीं तो एलिजिबल हैं, क्योंकि ये कम से कम 2 में है।
अगर हमें BIE के लिए अलग से एग्जाम लिखना है तो हमें AET के लिए एलिजिबल नहीं होना है. वी कैन नॉट बी एलिजिबल फॉर AET. तो ये लोग एलिजिबल हैं AET के लिए. दैट मीन्स ये वाले 3 लोग इनएलिजिबल हैं. टोटल कितने लोग हैं हमारे पास? और रैदर 104 में से 3 एलिजिबल नहीं है, 101 एलिजिबल है. अगर टोटल 400 लोगों ने फिजिक्स का टेस्ट लिखा है, 101 उसमें से एलिजिबल हैं AET के लिए, तो हाउ मेनी आर नॉन एलिजिबल्स? ऐसा रिवर्स करके सोचो. 104 लोग हैं जिनका फिजिक्स में यहाँ पर ये कौन सी एग्जाम की तैयारी करते हैं? AET की. 104 में से 101 लोग एलिजिबल हैं AET के लिए. 101 लोग एलिजिबल हैं. टोटल 400 लोग हैं जिन्होंने फिजिक्स में मोर स्कोर किया है, मोर देन 80 परसेंटाइल. एंड फिजिक्स इज द ओनली क्राइटेरिया. BIE की एग्जाम के लिए ओनली क्राइटेरिया इज फिजिक्स. तो ये केवल 400 कैंडिडेट को मैं कंसिडर करूंगा. उन 400 में से 101 तो एलिजिबल हो चुके हैं ऑलरेडी. तो कितने नॉन एलिजिबल है? 299. इन 299 को क्योंकि मैं AET में नहीं एग्जाम दिला सकता, मैं इनको BIE के एग्जाम दिलाऊंगा. ये क्वेश्चन था आपका. हाउ मेनी आर एलिजिबल फॉर BIE सेपरेट टेस्ट? 299. काफी एडवांस सेट था यहाँ पे, क्योंकि दो दो पॉसिबिलिटीज बने, दो दो तीन तीन वेरिएबल लगे, लीनियर इक्वेशंस लगे. तो क्लोज टू हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ओवरऑल ऑफ सेट थ्योरी. क्लोज टू 50 क्वेश्चंस. ये एक सेट में कुछ 4 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन के आसपास हमने सॉल्व किए. यू हैव सीन ऑल वेराइटी. 2 को मैक्सिमाइज करना है, 3 को मैक्सिमाइज करना है, आउटसाइड को मैक्सिमाइज करना है, रीजन थ्योरम. आप देखो 3 से 4 क्वेश्चन तो लीनियर इक्वेशन से बने. So all varieties are done. So as far as the syllabus goes, syllabus wise ये हमारा last session है आज. LRDA का syllabus भी आपका हो गया. Set theory was the only one remaining. अब हमारा पूरा focus होगा on workshops. More and more workshops we will have. I'll share the relevant schedule with you. Now what you need to do is बार बार रिपीट करो इन सेशंस को. जब भी आपको कोई ऐसा सेट मिले जो आपसे ना बने, बट यू रिमेंबर हमने क्लास में किया हुआ है, गो बैक एंड रिपीट इट. That's it guys. That's the end of session for today. Syllabus wise you are done with everything now.